Good afternoon, students. Myself, Dr. ANNAPURNA PRUSTY, Assistant Professor of Education, BJB Higher Secondary School, BHUBANESWAR. And in the last class, we have started the first bit of your Unit 3. That is what? Universalization of Elementary Education, বা প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ. In the last class, if you can recall, we have already discussed what is the background of universalization of elementary education, what is its need, what is the progress or how universalization of elementary education marched from the pre-independence period to till date. हम तार history पढ़िचे, and at the last part of our yesterday's discussion, we have touched the concept of universalization of elementary education. हम last part आड़ को पढ़िले प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनीकरण कौन. In this regard, I had made you clear that it is a government scheme. Universalization of elementary education is a scheme of Government of India that ensures providing free and compulsory education, to all the children belonging to the age group 6 to 14, irrespective of their caste, color, creed, community and gender. जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे, लिंग निर्विशेष रे, फिजिकल डेफिशिएंसी निर्विशेष रे, जाति धर्म वर्ण लिंग बा शारीरिक बा मानसिक अक्षमता निर्विशेष रे 6 रु 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त भारतीय शिशुंकु 6 रु 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त भारतीय शिशुंकु प्राथमिक शिक्षा मुक्त आ बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करिबा, मुक्त आ बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करिबा होची हमरो प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनीकरण. हला 6 रु 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त शिशुंकु मुक्त आ बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करिबा को आमे कहिबा प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनीकरण. एठी आमे 6 रु 14 वर्ष बयस सीमा बोली कहिले. This 6 to 14 years, this corresponds to which class? 6 to 14 years, it corresponds to class 1 to class 8. प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत श्रेणी को ये अंतर्भुक्त करूची. 6 रु 14 वर्ष बयसर पिला माने यूजुअली क्लास 1 रु क्लास 8 पर्यंत श्रेणी सीमा भितर रहंती. तेणु अन्य प्रकार आमे कहि परिबा जे प्रथम श्रेणी रु आरंभ करी अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षा समस्त शिशु मानक प्रोवाइड करिबा बा समस्त शिशु मानक प्रदान करिबा हेउची प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनीकरण. आर द्वितीय एस्पेक्ट हला प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनीकरण रे आउ जो दुईटी एस्पेक्ट हम ऐड करिचे. दिस एजुकेशन मस्ट बी फ्री एंड कंपल्सरी. दिस एजुकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द फीज. ये मुक्त हबो बा देय मुक्त हबो. छात्र छात्री मानक कोनोसी खर्च बा कोनोसी फीज वहन करिया को पड़िबो नाही. ये बाध्यतामूलक हबो माने आईन को प्रोटेक्शन दबो, नियम बा लीगल प्रोसीजर को प्रोटेक्शन दबो. विभिन्न नियम कानून एवं संवैधानिक प्रबंध द्वारा आमे समस्त शिशु को स्कूल फोल्ड को आनिबा, समस्त शिशु को विद्यालय को आनिबा एवं तांको प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षा प्रदान करिबा. ये होची हमरो कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, providing free and compulsory education to all the children belonging to the age group 6 to 14, irrespective of their differences, irrespective of their birth and background differences. So up to this we had discussed in the last class. I must touch a new point here. काली तुमको टिके hints देइथिली जे now a new national policy on education is arrived in India, which is known as the National Education Policy 2020.
2020 मसीह गोटे नूतन शिक्षा नीति आम प्रणयन करें भारत वर्ष रे। यही शिक्षा नीति बर्तमान जेहेतु गोटे नुआ ढांचे आसी सिंस इट हैज ए न्यू फ्रेमवर्क सो इट्स पॉलिसी इज आल्सो न्यू। सो जस्ट वी हैव टू टच what is the provision of universalization of elementary education in new education policy of India 2020। 2020 मसीह प्रणीत जो नुआ शिक्षा नीति आम प्रणयन कले से कौन कह कौ प्रकार डायरेक्शन अच्छी टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। पिला माने ये तुम बही गुड़ाक ना पब्लिश्ड बुक बर्तमान आपको इनवॉल्व करना। सो डोंट सर्च फॉर दिस इन द बुक्स। लेट मी जस्ट टच वन और टू बेसिक पॉइंट्स दैट जातीय नूतन जातीय शिक्षा नीति जो जातीय शिक्षा नीति आम 2020 प्रणयन कले से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन बाबद कौन कहगला मु अल्प के तुमको टच करुच्ची। सो लेट्स गो टू दैट। जातीय शिक्षा नीति 2020 रे कहगला जे फर्स्ट कथा ला एन इनक्लूसिव फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन द एलिमेंटरी लेवल। एन इनक्लूसिव फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन द एलिमेंटरी लेवल यार माने कौन? इनक्लूसिव फ्रेमवर्क मीन्स जातीय शिक्षा नीति 2020 कहला जे एलिमेंटरी एजुकेशन विल इंक्लूड all the children, it will include all the children in its elementary fold। all the children means all the children belonging to any caste, belonging to any community, belonging to any gender, and along with that it says that it will be inclusive in terms of their physical and mental deficiency। छात्र छात्री माने जो वर्गर हुंतु, जो जातिर हुंतु, जो संप्रदायर हुंतु, जो लिंगर हुंतु बा तांकर मानसिक व शारीरिक डेफिशिएंसी जहाँ भी थाउ, तांकर शारीरिक और मानसिक अक्षमता जे प्रकार भी थाउ, आमे से समस्त को आमर विद्यालय रे प्राथमिक शिक्षा भीतर को आमे तांको आनिबा। इनक्लूसिवनेस मीन्स अंतर्भुक्तिकरण। समस्त प्रकार शिशु माननकु तांकर जाति धर्म वर्ण एवं शारीरिक व मानसिक अक्षमता निर्विशेष रे आमे समस्त शिशु को प्राथमिक शिक्षा रे अंतर्भुक्त करिबा। दिस इज द इनक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन as per National Education Policy 2020। Then what? It focuses on universalization of education from preschool to secondary level। वर्तमान NEP 2020 कौन कहला? कहला जे not only the primary education but we have to focus, we have to now give attention for universalization of education at the pre-primary level and as well as in the secondary level। not only the primary education only but we have to focus on universalization of preschool level and universalization of secondary level education। प्राक विद्यालय शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा को मध्य आमे यूनिवर्सलाइज करिबा बोली NEP 2020 बा जातीय शिक्षा नीति 2020 हमको निर्देश दउचंती। तृतीय कथा हला जे नो चाइल्ड विल लॉस एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ बर्थ एंड बैकग्राउंड। कौन से पिला को आमे एजुकेशन रो अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव करिबा नै बा शिक्षा सुजोग रु आमे कौन से शिशु को वंचित करिबा नै तार जन्म भित्तिरे बा तार बैकग्राउंड बा सामाजिक पृष्ठभूमि भित्तिरे। यार माने कौन? पिला माने छात्र छात्री माने तांकर बर्थ बेसिस रे अनेक समय डिफरेंट थांती। बर्थ बेसिस रे डिफरेंस कौन? कहीं हुए तो मानसिक स्तर रे अनग्रसर थाए, कहीं शारीरिक स्तर रे चैलेंज थांती, शारीरिक मानसिक आवेगिक अक्षमता क्या पाखे थी पारे। ये हला बर्थ रे डिफरेंस। बैकग्राउंड आउ बर्थ रे डिफरेंस कौन? ये कौ जातिर कौ संप्रदायर से तार जन्म उपर डिपेंड करुच्ची। तेणु बर्थ बेसिस रे पिला माने तांकर शारीरिक व मानसिक अक्षमता बा सक्षमता भित्तिरे भिन्न, छात्र छात्री माने तांकर जाति धर्म बा संप्रदाय भित्तिरे मध्य भिन्न आज पर देयर बर्थ। बैकग्राउंड हला सेमानकर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जणे विभिन्न प्रकार इकोनॉमिक बैकग्राउंड आसुची, जणे विभिन्न प्रकार सोशल बैकग्राउंड आसुची।
ये सब बर्थ भित्तिक आ बैकग्राउंड भित्तिक विभिन्नता सत्वे बा वैषम्य सत्वे कौन से छात्र छात्री को बा कौन से शिशु को वी शुड नॉट डिप्राइव फ्रॉम एलिमेंटरी एजुकेशन। आमे कौन से शिशु को ये जन्म भित्तिक बा सामाजिक पृष्ठभूमि भित्तिक वैषम्य भित्ति कौन से शिशु को आमे प्राथमिक शिक्षा वंचित करवा नहीं बा कौन से शिशु को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आमे वंचित करवा नहीं। या जातीय शिक्षा नीति 2020 कहले हला। ता नेक्स्ट हला जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट, देयर इज ए टारगेट फिक्स्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट वी हैव टू अचीव ए टारगेट ऑफ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। ये कहले जे 2030 मसीहा भितर आमे 100% शिशु को आमर विद्यालय मानक एनरोल करवा आम विद्यालय फोल्ड रे आमे 100% शिशु को 100 के 100 शिशु को विल एनरोल। इट मीन्स व्हाट? दिस इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आमे समस्त शिशु को विद्यालय फोल्ड को आनिबार अर्थ है कि आमे 100% पिला को विद्यालय रे ना लिखिबा बा 100% पिला को आमे एजुकेशन प्रोवाइड करबा। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन as given by National Education Policy 2020, and it reaffirms the bridge. It reaffirms to bridge the gaps in access, participation, and learning outcome in school education. National Policy on Education 2020 ये कहले जे पिला मानकर जो विद्यालय शिक्षा एक्सेस करिबा बा विद्यालय शिक्षा पाइबा पई तांको भीतर जो वैषम्य रहउची, विद्यालय शिक्षा रे पार्टिसिपेट करिबारे जो वैषम्य रहउची, पिला मानकर क्वालिटी एजुकेशन पाइबारे जो वैषम्य रहउची बा जो विभिन्नता रहउची, विभिन्न स्कूल मध्य जो विभिन्नता रहउची क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करिबारे, तेणु छात्र छात्री माने मध्य विभिन्न भाव में क्वालिटी एजुकेशन पाउछन्ती। सेठी भिन्नता देखाउची। गोटे गाँ स्कूल रे जो प्रकार एक्सेस आउ लर्निंग आउटकम अच्छी से प्रकार लर्निंग आउटकम हुए तो सहर रे नुहे, सहर रे बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पिला माने पाउछन्ती, बेटर स्कूल को एक्सेस पाउछन्ती, पार्टिसिपेशन पई बेसी सुजोग पाउछन्ती इन द अर्बन एरिया देन द रूरल एरिया। सब स्कूल रे हमर लर्निंग आउटकम समान सेति पई हे परबो। तेणु एनईपी 2020 कहला जे we will bridge the gap in access, participation and learning outcome in school education. So this is another indication towards your universalization of elementary education. तेणु प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण बाबद रे हमर जातीय शिक्षा नीति 2020 ए प्रकार हमको निर्देश देइचंदी बा सेठी एतिकी इंडिकेशन अछि। तापरे आमे जिबा ई हला हमर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन बाबद रे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नुआ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कोन कहले। वर्तमान पिला माने आमे आरो मुख्य पाठ को जिबा जे व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन रो विभिन्न दिग गुडी कोन बा आकु आमे वर्तमान प्रांजल भाबे स्टेप बाय स्टेप बुझिबा जे व्हाट एग्जैक्टली इज इट। आमे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन रो विभिन्न उपादान गुडाक विभिन्न दिग गुडाक वर्तमान जिबा बा ताको डिस्कशन करबा। सो लेट मी स्टार्ट विथ दिस। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, व्हाट इट इज and how it will be done. So what are the dimensions? Just let me read it out, then I will deal with it one by one. So it is universalization of provision, universalization of enrollment, universalization of retention, universalization of achievement, and universalization of participation. So there are these 5 major dimensions are there. They are attached with universalization of elementary education. Let us deal with this one by one. The first dimension is universalization of provision. Universalization of provision. What is this? Universalization of provision means the provision of school for all children belonging to the age group 6 to 14. The provision of school to all the children belonging to the age group 6 to 14. यार माने कोन? आमे जेतेबेले कहूचे जे we have to provide free and compulsory primary education to all children, प्रथम आवश्यकता तार कोन? प्रथम आवश्यकता हला
जे जदि आम समस्त पिला स्कूल को आने को चाहूचे प्राथमिक विद्यालय को आने को चाहूचे प्रथम आवश्यकता होची देयर मस्ट बी द स्कूल फर्स्ट, देयर मस्ट बी द प्रोविजन ऑफ स्कूल फर्स्ट, then only we can bring the students to the school fold. So the basic necessity of universalization of elementary education is establishment of school, establishment of school. Until and unless जेपर्यंत आम बहुत गुड़े स्कूल न पाइबा आम समस्त पिला विद्यालय फोल्ड को आनी पारिबा नाही. So the first dimension is establishment of a school within the reach of each student, within the reach of each student. तेणु यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन प्रथम डायमेंशन भाव आम कौन कहबा ना इट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन मीन्स ऑल द चिल्ड्रेन मस्ट हैव द प्रोविजन ऑफ एक्सेसिंग ए स्कूल नियर बाय टू देयर लोकालिटी. तांको अंचल रे गोटे विद्यालय प्रबंध प्रथम रहिबा दरकार. तो एथिपाई प्रथम सरकार कहले जे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन रो अर्थ से प्रथम निर्दिष्ट कले जे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ at least one elementary school, establishment of at least one primary school within the walking distance of all children belonging to the age group 6 to 14. 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त शिशु मानकर walking distance भितरे से माने जेमति चाली के जाई परिबे गोटे विद्यालय को सेमान को walking distance भितरे गोटे स्कूल अति कम रे गोटे प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश करा जे. बुझी परलो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन रे कोन कहला गला ना there must be establishment of at least one primary school within the walking distance of each child. प्रत्येक शिशुर चाली की जाई पारुथिला भलिया दूरता भितरे गोटे प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जे. अति कम रे गोटे प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जे so that all the students will get the provision of an element of an elementary school. Okay, किंतु एटी प्रॉब्लम कोन हला what is meant by walking distance was not defined. चाली की जीवा भलिया दूरता माने कौन सेटा को सेमाने किछि निर्दिष्ट करि पारले नाही. हुए तो गोटे पिला कहबो मु 6 किलोमीटर चली के जाई परिबी, आउ गोटे पिला पई हो तो 1 किलोमीटर से चली परिबो, आउ को पिला 3 किलोमीटर चली परिबो. व्हाट इज मीन्ड बाय walking distance it was not defined at the initial stage. Afterwards, so what happened, government had just simply it is changed a bit, change was there. तापर कुआ गला जे नो let it be not walking distance, rather say it that within 1 kilometer of distance, within 1 kilometer of distance at least one school will be established. प्रत्येक गोटे किलोमीटर डिस्टेंस रे गोटे लेखा प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जाय. And remember that there is a word, there is a term at least means what, अति कम रे 1 किलोमीटर भितरे अति कम रे गोटे स्कूल तैयारी करा जाय. ता माने एक रु अधिक स्कूल मध्ये प्रतिष्ठा करा जाय पारे. जो जगह डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बेसी गोटे लोकालिटी रे मन करा जो 6 ରୁ 14 वर्ष भितर अनेक स्टूडेंट अछंती ताला इन दैट केस मोर देन वन स्कूल मध्ये गोटे किलोमीटर भितर एस्टैब्लिश करा जाय पारे. जो गुडा थिकली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया से सब जगह रे मोर देन वन स्कूल विदिन 1 किलोमीटर मध्ये आमे देखिबा पाइबा भारत वर्ष रे. सो इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ए नटसेल व्हाट वी कैन से व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन. Universalization of provision is establishment of at least one elementary school in each 1 kilometer of distance. प्रत्येक गोटे किलोमीटर रे अति कम रे गोटे एलिमेंटरी स्कूल बा गोटे प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करिबा होउचे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन बा सुविधा सुजोगर सार्वजनीकरण. याकू कहा जाय सुविधा सुजोगर सार्वजनीकरण. विद्यालय रो सुजोग बा विद्यालय आवश्यकता आम सब छात्र छात्री मानकर पूरण करबा बा स्कूल प्रोविजन विल प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 6 to 14. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर फर्स्ट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन. जे पर्यंत विद्यालय गोटे किलोमीटर गोटे लेखा प्रतिष्ठा हेबो नाही से पर्यंत यूनिवर्सलाइजेशन संभव हेबो नाही. सो इट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एट लीस्ट वन स्कूल, वन एलिमेंटरी स्कूल इन ईच 1 kilometer of distance. Then come to the second dimension. Our द्वितीय दिगटी कौन? It is universalization of enrollment. Universalization of enrollment. This the term enrollment you are very much acquainted with this word. Enrollment शब्दर मूल रे गोटे कोटे रोल अछि. तमे गोटे रोल नंबर पाइचो. Enrollment means पंजीकरण. ना लेखेबा
अति सहज भाव में कहले विद्यालय रे ना लिखेबा। सो व्हाट इज ए ना लिखेबार यूनिवर्सलाइजेशन? व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट? आकु हम एमती डिफाइन करबा, all children belonging to the age group 6 to 14, every time you remember this, the age group 6 to 14, 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା, all the children belonging to the age group 6 to 14 must be enrolled in one or other elementary school, in one or other elementary school। आर अर्थ हला 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ मध्य 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ बयस सीमा मध्य थिबा समस्त शिशु माननकु आमे जे कोनोसी गोटिए प्राथमिक विद्यालय रे तार ना पंजीकरण करैबा। तार अर्थ जे कोनोसी एक प्राथमिक विद्यालय रे 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त शिशु माननकु आमे एडमिशन देबा दरकार बा एनरोल करबा दरकार बा तार ना पंजीकरण करबा दरकार। सहज भाव रे कहिले प्रत्येक पिला को 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त पिला को आमे कोनोसी ना कोनोसी एक स्कूल रे एडमिशन देबा बा एनरोल्ड करैबा बा तार ना लिखेबा। प्रत्येक पिला को आमे प्राथमिक विद्यालय रे ना लिखेबा। ये होची तुमरो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट बा पंजीकरण व्यवस्था को आमे सार्वजनीन करिबा। एई जो एडमिशन ता हबो पिला माने ता तळे गोटे लाइन लिखाई छि देखो जे दिस एडमिशन मस्ट बी डन into age proportionate class। एज proportionate class ए कथाटा तमे हुए तो बुझी परिबो नै, मु तुमके एटा टिके बुझौछु व्हाट इज मीन्ड बाय एज proportionate class, एडमिशन इनटू एज proportionate class। आमे जते बेले कहिले 6 ରୁ 14 वर्ष भीतर समस्त शिशु को आमे विद्यालय रे ना लिखेबा, प्राथमिक विद्यालय रे ना लिखेबा। जस्ट सपोज देयर इज ए चाइल्ड who is of 11 years old। सपोज we found a child who is 11 years old, तार बयस है 11 वर्ष। आमे बर्तमान एई पिला को देखिले जे he has not taken admission in any school, he is not enrolled in any school, तार ना कोनोसी विद्यालय रे पंजीकरण हेई नाही। then what is our duty? The duty of government is to enroll this child, this 11 years child in a primary school or in an elementary school। गोटे प्राथमिक विद्यालय रे आकु नै के हम ना लिखेबा। वर्तमान चिंता कर पिला माने आकु नै कोठी ना लिखेबा, को क्लास रे ताकु प्रथम श्रेणी रे हम पढेबा। गोटे 11 वर्षर पिला को जदि हम प्रथम श्रेणी रे पढेबा ताहले 12 13 14 तार तृतीय श्रेणी हला बेलकु बा चतुर्थ श्रेणी हला बेलकु ताकु 14 वर्ष हे जिवो। जेतोले 14 वर्ष ताकु चतुर्थ श्रेणी रे हे जिवो ताकु हमें आउ गवर्नमेंट ताकु पैसा प्रोवाइड करिवो नै, तार एजुकेशन फ्री हबो नै लाइक दैट, कारण ताकु 14 वर्ष हे गेला। ता पाठ पढा सेतोलु केते हितिबो? मात्र चतुर्थ श्रेणी। So what will happen to universalization of elementary education? आमे जो कहितले जे 6 to 14 इयर्स रो सब पिला को आमे क्लास 1 रो क्लास 8 पर्यंत पाठ पढाइबा, से कथाटा एटी हेई परिबो नाही, संभव हेई परिबो नाही। तेबे आमे से पिला को कोठी एडमिशन करिबा so that he can complete his education from class 1 to class 8 as well as he will complete his age group 6 to 14। ये एठी आसीबा हमर एज प्रोपोर्शनेट, बयस सह समानुपाती हेउथिबा श्रेणी रे आमे ताको एडमिशन करेबा। माने गोटे पिला 11 इयर्स रो माने तार एज प्रोपोर्शनेट क्लास हला 11 वर्ष रे से 6th क्लास रे पढिबा कथा, 11 वर्ष रे से 5 पास करके 6 रे पढिबा कथा बा 5th क्लास रे पढिबा कथा। तेनु एज प्रोपोर्शनेट क्लास अर्थ हला ता बयस अनुसार जो क्लास उद्दिष्ट, ता बयस अनुपात रे जो क्लास ता पई उद्दिष्ट सेही क्लास रे ताको एडमिशन करेबा। वर्तमान हम 11 वर्ष रे पिलाटा को क्लास 5 रे एडमिशन करेबा। ओके, आको हम वर्तमान क्लास 11 रे एक्चुअली क्लास 6 रे ही से पढियो। 11 12 वर्ष होचे 6th क्लास, 12 13 7th क्लास, 13 14 हला 8th क्लास। तेनु 11 इयर्स ताको होची माने ही विल बी एनरोल्ड इन क्लास 6। ये होची तुमरो एज प्रोपोर्शनेट एडमिशन बा एज प्रोपोर्शनेट एनरोलमेंट। तो जदि आमे गोटे 11 वर्षर पिला को पाइले जे प्राथमिक शिक्षा रे तार ना लिखाई नै, हम ताको नै कि 6th क्लास रे एडमिशन करिया। एठी तुम मन रे गोटे प्रश्न आसुबो जे जदि आमे गोटे पिला को नै कि 6 वर्ष 6 क्लास रे बा 6th क्लास रे एडमिशन करिबा हु इज ऑफ 11 इयर्स, से 5 क्लास पर्यंत पाठ पढी नै, he do not have any idea about A B C D O हर्ष दीर्घ and 1 2 3 4, how he will go for the history, geography, science, mathematics of class 6? Yes, there is a क्वेश्चन। आर सॉल्यूशन पाई
आमर व्यवस्था कौन कराई ना ये जो क्लास 5 पर्यंत जी बेसिक एजुकेशन रहा पिला माने दैट विल बी टॉट टू दैट चाइल्ड से 11 इयर्स पिला को ये 5 क्लास पर्यंत पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ को एक्स्ट्रा क्लास नहीं कि टीचर ताको अपडेट करेबे एक्स्ट्रा क्लास नहीं कि ये एक्स्ट्रा क्लास रो व्यवस्था 3 मास रु आरंभ करी 3 वर्ष पर्यंत प्रोवाइड करा जाए है गोटे पिलार जदि क्लास 2 रे से एडमिशन करूचे ताको 6 मास रे पाठ पढाइले हुए तो से प्रथम श्रेणी पाठटा तार सरी जिवो जदि जने क्लास 3 रे एडमिशन करूचे ताहले ताको हमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी रे पाठ हुए तो वर्ष भीतर पढाई दे पारिबा जे 6th क्लास रे एडमिशन करूचे ताको 3 वर्ष पाठ पढाइबा दरकार सो 3 मंथ रु आरंभ करी 3 इयर्स पर्यंत एक्स्ट्रा क्लास करिके टीचर रो दायित्व हला गोटे विद्यालय रो टीचर रो दायित्व हला पिला को अपडेट करेबो एंड एज स्पेसिफिक बा एज प्रोपोर्शनेट एडमिशन हम पिला को करेगा सो दिस इज द सेकंड कांसेप्ट अटैच्ड टू इट योर एनरोलमेंट आउ गोटे कथा एठी कुआ गला जे नो स्टूडेंट ए जो आमे जतले एनरोलमेंट करूचे सेतले आमे आउ गोटे कथा कोन देखिबा ना नो स्टूडेंट शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम एनरोलमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बर्थ एंड बैकग्राउंड ए बर्थ एंड बैकग्राउंड ऑलरेडी तुम कहि सरलेनी पिला को तारो जन्मगत वैषम्य बा तार सामाजिक स्थितिगत वैषम्य भित्तिर आमे कौनसी शिशु को डिबार करि परिबा नाही आमे कौनसी शिशु को विद्यालय रे एडमिशन करिबारु वंचित करि परिबा नाही आमे समस्त शिशु को विद्यालय रे प्राथमिक विद्यालय रे 6 रु 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त शिशु को प्राथमिक विद्यालय रे एनरोल करिया पई बाध्य नो स्टूडेंट शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम एनरोलमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बर्थ एंड बैकग्राउंड कौनसी गोटे भिन्न जाति भिन्न संप्रदाय बा शारीरिक अक्षमता विशिष्ट शिशु बा मानसिक अक्षमता विशिष्ट शिशु एमिति कही आमे कौनसी शिशु को एडमिशन रु वंचित करिबा नाही बा एनरोलमेंट रु वंचित करिबा नाही मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 6 to 14 irrespective of their caste color creed community and physical or mental disability they will be enrolled in the nearest elementary school. This is universalization of enrollment. 6 रु 14 वर्ष मध्य थिबा समस्त शिशु को आमे कोनोसी ना कोनोसी प्राथमिक विद्यालय रे एनरोल करिबा बा तांकर नाम पंजीकरण करैबा बा तांकु ना लेखैबा दिस इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट तो एटा हेले जाई कि आमे प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण कथा चिंता करि पारिबा समस्त शिशु को आमे विद्यालय रे ना लेखैबा तृतीय कथा कोन हला द थर्ड dimension is universalization of retention universalization of retention या माने कोन रिटेंशन शब्दर अर्थ जन को गोटे जगार धारण करी रखिबा रिटेंशन मीन्स धारण करबा हम जदि को ट्रांसलेट करबा धारण करबा तो गोटे जन को गोटे जगार धरी रखिबा तो रिटेंशन कहिला जे आमे खाली जदि पिला को आनी के स्कूल रे एडमिशन कर दबा 6 रु 14 वर्ष भीतर जते पिला अछन तांको आमे एडमिशन कर दबा सपोज आमे पिला को एडमिशन करे देते क्लास 1 रे क्लास 2 रे पिला पढिला क्लास 3 बेलू को ताको भल लागिलानी बा तार फैमिली रे किछि प्रॉब्लम हला बा तार कोठी गोटे से चाइल्ड लेबर हिसाब रे चाकरी पाई गेला पैसा किछि रोजगार करिवो बा तार कोनोसी कारण रे फॉर एनी रीजन और अदर सपोज द चाइल्ड लीव्स द स्कूल पिला गोटे द्वितीय श्रेणी बा तृतीय श्रेणी हे गेला बा तार पंचम श्रेणी हे गेला से हठात स्कूल छाड़ी के पळै गेला देन व्हाट अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 8th क्लास जे पर्यंत से 8th क्लास कंप्लीट न करूछ हम ताको एलिमेंटरी एजुकेशन से कंप्लीट कला बोली कहि परिबा नै सो इफ इट विल हैपन देन द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन विल बी ग्रेट फेल्योर हमें एई स्वप्नटा को हमें केबे साकार करि परिबा नै So the duty of government is, the duty of a school is, the duty of other stakeholders is to retain the child in school, to retain the child in elementary school until the completion of class 8, until the completion of class 8, until he attains his age of 14. ताकु 14 वर्ष हेबा पर्यंत से अष्टम श्रेणी पास करिवा पर्यंत we have to retain the child in the elementary school. आमे पिला को से विद्यालय रे धरी रखिबा आमे ताको छोड़ छाड़ीबा नाही ए जो पिला माने जो पळै जानते स्कूल छाड़ी के पिला माने यू रिमेंबर ए वर्ड ए टेक्निकल वर्ड दोज स्टूडेंट्स आर नोन एज द ड्रॉपआउट्स
दे आर द ड्रॉप आउट्स विद्यालय परित्यागी सेमानकु आमे कहूचे विद्यालय परित्यागी दे आर नोन एज द ड्रॉप आउट्स ए प्रॉब्लम टाकू जो माने स्कूल छाड़ी के पळांती ताकू कह जे ड्रॉप आउट प्रॉब्लम रिमेंबर दिस ये एग्जाम पाई भी दरकार तमर पाठ बुझिया पाई भी दरकार ए ड्रॉप आउट जेते बेले हे जानती पिला माने आ द्वारा गोटे मेजर समस्या सृष्टि हुए कौन समस्या सृष्टि हुए जेते बेले पिला स्कूल छाड़ी पढ़ाऊँ मन कर गोटे पिला पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ला 5th क्लास में स्कूल छाड़ी पढ़ेगा तो ये जो ड्रॉप आउट हो गला पिलाटा ये गोटे मेजर प्रॉब्लम तैयारी है that is known as technically that is known as wastage you write it down it is known as wastage बा अपचय कौन wastage है ना जिते बेले पिलाटा 5 क्लास पर्यंत पाठ पढ़ीला क्लास 5 पर्यंत पाठ पढ़ीला गवर्नमेंट हैज स्पेंट a huge amount of money towards his education से पिलार पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ाइया गवर्नमेंट गुड़ाए पैसा खर्च कर गवर्नमेंट ताकू मिड डे मील देती गवर्नमेंट ताकू पोशाक देती गवर्नमेंट तापाई बही किणी गवर्नमेंट सी पाठ पढ़िबो बोली सरकार शिक्षक मानकु चाकरी देकी तांकु दरमा दउची लैबोरेटरी रे इक्विपमेंट किना होची ए पिला पिछा जेतिके पैसा खर्च होइतिला गवर्नमेंट खर्च करतिला दैट द मनी इज नाउ वेस्टेज ऑफ मनी पिला कंप्लीट कला नहीं 8th क्लास पिलार यूनिवर्सलाइजेशन दिगरे अवदान रहलो नहीं इट इज द फाइनेंस the money that is spent towards the child's education it is a total wastage तेणु गोटे पिला जो ड्रॉप आउट हो जाए जिते पिला माने ड्रॉप आउट हो जाती ड्रॉप आउट प्रॉब्लम क्रिएट्स ए न्यू प्रॉब्लम दैट इज नोन एज वेस्टेज ए वेस्टेज कथा भी आम आगे पढ़ा तुम एति बर्तमान जानी पिला जो छाड़ी स्कूल पढ़ाऊे ता पिछा सरकार जी पैसा खर्च करते दैट मनी इज नाउ नथिंग बट वेस्टेज ये है गोटे कथा तेणु आमे जिते कहूचे पिला को धारण कर रखा विद्यालय रे आमे कौन करवा ना एटी अटैच है गोटे कथा जे ऑल स्टूडेंट एनरोल्ड इन एलिमेंटरी स्कूल मस्ट बी रिटेन्ड टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ये है प्रथम कथा जहाँ कहली आम ताकू विद्यालय रे धारण कर रखा अष्टम श्रेणी पास करिया पर्यंत या द्वारा कौन हम ना बा आकु आम अदर वे कौन कहबा ना जीरो ड्रॉप आउट को आम टार्गेट करिया जीरो ड्रॉप आउट नो स्टूडेंट विल बी ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द स्कूल जीरो ड्रॉप आउट कौन से पिला विद्यालय जमती छाड़ी जीवे ना अष्टम श्रेणी पास कला परे से माने विद्यालय छाड़ी क्लास 8th कंप्लीशन पूर्व नो स्टूडेंट विल लीव द स्कूल नो स्टूडेंट विल लीव द स्कूल बिफोर कंप्लीशन ऑफ क्लास 8 है प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने पूर्व कौन से शिशु विद्यालय छाड़ी जाई परिबे नाही दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन एथिपाई सरकार गोटे नियम तैयारी कले दैट इज नोन एज नो डिटेंशन पॉलिसी यू लुक एट द पीपीटी पेज नो डिटेंशन पॉलिसी कौन से पिला को आमे डिटेन करबा नाही क्लास रे हम ताको डिटेन करबा नाही डिटेन करिया माने गोटाई जगह स्थिर करी रखि दबा कोनते नि से पिलाटा जे फेल हे जाय ताको कोनते से क्लास 9th रे डिटेन हे गला माने से सेही क्लास रे आउरी किछि दिन पई रहि गला गोटे वर्ष पई रहि गला गवर्नमेंट कहला जे नो डिटेंशन पॉलिसी आम अप्लाई करबा मीन्स नो स्टूडेंट शुड बी डिटेन्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास फॉर मोर देन 1 year ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस नो स्टूडेंट शुड बी डिटेन्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास गोटे निर्दिष्ट श्रेणी रे कौन से शिशु डिटेन होगी रहिबे नाही केते दिन पई ना फॉर मोर देन 1 year कौन से श्रेणी रे आमे पिला को गोटे वर्ष रु अधिक समय रखिबा नाही क्लास 5 से वर्षे ही पढ़िबो क्लास 6 वर्षे पढ़िबो क्लास 7 भी वर्षे पढ़िबो सब क्लास रे से वर्षे पढ़िबो गोटे वर्ष रु अधिक समय आमे रखिबा नाही केमिति रखिबा नाही ना ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस परीक्षा रे भलो कला नाही कही आमे कौन से पिला को गोटे क्लास रे वर्ष रु अधिक समय डिटेन करी रखिबा नाही इन अदर वर्ड्स रे कहले तमे कोन बुझिलो माने ता माने सीधा सड़क भाबे हला कौन से पिला को आमे गोटे क्लास रे से परीक्षा रे भलो कलानी बोली एकेडमिक परफॉर्मेंस तार भलो हेलानी बोली हम फेल करिबा नाही आमे ताकू फेल करिबा नाही क्लास 1 रु क्लास 8 पर्यंत पिला डिटेन हबो नाही कौन से क्लास रे वर्ष को अधिक बास फेल हबो नाही इट इज ए यूनिवर्सल पास सिस्टम पिला परीक्षा रे जा करूना काई ताको हम पास करै चलिबा गोटे वर्ष रे से गोटे वर्ष ही पढ़िबो या द्वारा कोन हबो पिलार इंटरेस्ट रहबो जे से पास करि चलुची तेन से नेक्स्ट ईयर को पाठ पढ़िया पई तार इंटरेस्ट हबो दैट्स व्हाई the no detention policy it will help towards
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। हाँ, बुझिला ए कथा। नो स्टूडेंट शुड बी डिटेन्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास फॉर मोर देन 1 year ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो दिस इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। आम शिशु मानू बा छात्र छात्री मानू अष्टम श्रेणी शेष करने पर्यंत, प्राथमिक शिक्षा शेष करने पर्यंत प्राथमिक विद्यालय आम धारण कर रखा आम रिटेन कर रखा है। जदि पिला माने रिटेन न हुए ताहले गोटे प्रोब्लेम तुमको कहली ड्रॉप आउट हेले वेस्टेज हम। आउ गोटे प्रोब्लेम भी आ द्वारा सृष्टि हुए जदि रिटेंशन नहला जदि आम गोटे पिला को वर्षक अधिका समय जदि गोटे पिला गोटे क्लास रे रहउची बा फेल हो जाउची ताहले आ द्वारा आउ गोटे प्रोब्लेम हुए। आ गोटे टेक्निकल शब्द दैट इज नोन एज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन माने गोटे जगह स्थिर होइक रहि जिबा। ए शब्दटी भी लेख। स्टैग्नेशन माने गोटे जगह स्थिर होई रहिबा। स्टैग्नेशन रे कोन हुए जदि मनकर जो गोटे पिला क्लास 3 रे फेल हो गला माने गवर्नमेंट रो प्रपोजल रे बा गवर्नमेंट रो प्लान रे गोटे निर्दिष्ट अमाउंट ऑफ मनी शुड बी स्पेंट टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ दैट चाइल्ड बोली थिला। क्लास 3 पढ़िबा पई गोटे पिला पई एतिक पैसा खर्च हो। गवर्नमेंट रो गोटे स्कीम अछि व्हेन द चाइल्ड विल बी डिटेन्ड इन क्लास 3 फॉर मोर देन 1 year आउ गोटे वर्ष जदि से सेठी तृतीय श्रेणी रे पढ़िला ताले कोन हबो गवर्नमेंट को आउ सेतिक पैसा खर्च करियो पड़ियो। जदि से 2 वर्ष पढ़िला 2 वर्ष फेल हैला आउ सेतिक पैसा खर्च करियो पड़ियो। एमिति अनेक पिला बाहरिबे जो माने वर्षे नुए 2 वर्ष नुए 5 वर्ष भी को क्लास रे फेल हेबे। तो व्हाट विल बी द बजट? गवर्नमेंट प्लान केमते करिवो को पिला को क्लास रे केते वर्ष फेल हबो आ केते मनी गवर्नमेंट ताहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन पई खर्च करिवो। दैट विल बी अनलिमिटेड एंड अन गोटे किछि प्लान करि हबो नै केते मनी एई बाबद रे गवर्नमेंट खर्च करिवो। बुझिला? तेनो स्टैग्नेशन हैला गोटे पिला जदि स्थिर होई कि गोटे क्लास रे रहि जाउची वर्षक रु अधिक देन गवर्नमेंट अगेन विल बियर सम फाइनेंशियल बर्डन। गवर्नमेंट रो मुंडो रे बा गवर्नमेंट ऊपर आउ किछि अधिक वर्षर पाठ पढ़ा पई पिला को ताको अधिक पैसा खर्च करिया पड़िबो। एई जो बर्डन ता गवर्नमेंट बर्तन बियर कला दैट इज नोन एज स्टैग्नेशन। इट इज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू डिटेनिंग ए पर्टिकुलर चाइल्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास फॉर मोर देन 1 year। हला गोटे पिला को गोटे क्लास रे वर्षक अधिक समय धरी रखिबा जदि आमे ताहले ता द्वारा गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करे जो फाइनेंशियल बर्डन उठाए ताको आमे कहूचे स्टैग्नेशन। वेस्टेज हला जदि प्रीमैच्योर विड्रॉल पिला रहि जाउची जदि पिला ड्रॉप आउट हो जाउची स्कूल रो ताहले गवर्नमेंट को जो पैसा से खर्च करथिला से पिलार पाठपढ़ा प्रति पाठपढ़ा पई से पैसा गवर्नमेंट रो वेस्टेज होची। ए दुईटा शब्द आमे आगु को डील करिबा होत आसंता काली क्लास रे। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट। एनीवे जदि आमे पिलार यूनिवर्सलाइजेशन रिटेंशन कथा चिंता करूचे ताले वी कैन सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स। देयर विल नॉट बी एनी वेस्टेज प्रॉब्लम, देयर विल नॉट बी एनी स्टैग्नेशन प्रॉब्लम। जदि पिला डिटेन हे कि गोटे क्लास रे रहउची बा पिला जदि विद्यालय छाडी कि अष्टम श्रेणी पास करिया पूर्व जदि विद्यालय छाडी पळौची ताहले वेस्टेज रो समस्या रो सम्मुखीन आमे होउची। So this is universalization of retention. All children enrolled in the elementary school should be retained in the elementary school until they complete class 8, until they attain their age of 14. This is retention. Then the next dimension is universalization of achievement. Universalization of achievement. पिला माने वर्तमान तमे देखो अचीवमेंट शब्द अर्थ कोन किछ गोटे अचीव करबा हमर फाइनली हमें जो लक्ष्य साधन करबा। मते तमे गोटे कांसेप्ट को हमें जतबे एई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन कथा कहूचे व्हाट फॉर मु तो प्रथम दिन कहितली जे सो मेनी इश्यूज आर देयर जार सॉल्यूशन पे एजुकेशन समस्त पाइबा दरकार। एडल्ट फ्रांचाइज जोटा हमें कहूचे साबालक भोट प्रथा बा गणतंत्र को सुदृढ़ करने समस्त एजुकेशन पाइबा दरकार। या सहित पिला माने आउ गोटे ऑब्जेक्टिव आमर निश्चय अछि जे व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ एजुकेशन आमे काहे के चिंता करूचे समस्त को एजुकेशन प्रोवाइड करबा। द ब्रॉडर एम इज टू प्रिपेयर फंक्शनल मेंबर्स फॉर द सोसाइटी। आमे समाज पई कार्यक्षम सदस्य सृष्टि करबा को चाहूचे, किछि उत्तम नागरिक तैयारी करिया को चाहूचे, किसी एमिति मनुष्य तैयारी करिया चाहूचे जो माने समाज को आगु को बा उन्नति करेबे, जो माने देशर डेवलपमेंट रे हेल्प करिवे, दोज विल हेल्प इन
achieving the goal of nation, those who will develop the societal condition, those who will think for the nation and society, those who can contribute to our science, our technology, those who will think for the development of our culture, literature and our science. So to make functional members of the society, to create functional members of the society, आमे समस्त को एजुकेशन प्रोवाइड करिया कथा कहू। आमे जेतेबेले पिला माने कहिले जे नो डिटेंशन पॉलिसी, आमे कहले कोनोसी पिला गोटे क्लास रे फेल होबो नै, आमे तांको गोटे पर गोटे क्लास अष्टम श्रेणी पर्यंत पास करै दा। रिजल्ट कोन होबो जेतेबेले से 8th क्लास पास कर जाउछंदी, आमे देखुचे जे दे हैव समटाइम्स सम स्टूडेंट्स they have not even mastered the basic skills, they have not mastered the basic skills. आमे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन बेले आमे कहले मिनिमम 3 hours must be achieved, minimum 3 hours must be achieved. गोटे रीडिंग स्किल, गोटे राइटिंग स्किल, गोटे अरिथमेटिक स्किल। 3 hours रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, पठन, गणन आउ लिखन। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, पठन, लिखन आ गणन। जन पढ़ी पारिबो, लिखि पारिबो आ संख्या संबंधित समस्या समाधान करि पारिबो। एतिकी बेसिक मिनिमम स्किल गोटे पिला भितर डेवलप होबा दरकार एटलिस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास 8। वर्तमान पिला माने ए 3 hour टा इंप्रूव करके 5 hour और 7 hour को आसलानी। तमे जदि केतो सुजोग पाइबो ताको पढ़िबो, से भितर को जाउनी। तो अति कम रे किछि बेसिक स्किल पिला भितर डेवलप करबा दरकार। सेति पय हम पिला को सरकार एते पैसा खर्च करी पढ़ुछि। किंतु आमे देखिले जे पिला को गोटे पर गोटे क्लास हम पास करके 8th क्लास पर्यंत नै गेले, व्हाट हैपेंड, सम स्टूडेंट्स वर देयर जो मानकर बेसिक स्किल मध्ये डेवलप कला नाही। तमाने बेसिक पाठ जानि नांती, एबीसीडी जानि नांती, शब्दर अर्थ जानि नांती, राज्य दर राजधानी जानि नांती, टूरिस्ट प्लेस जानि नांती, मिसाण फडाण जानि नांती, दे नो नथिंग। So what is the objective, how the real objective, the main goal, the fundamental goal of universalization of elementary education will be served, will be achieved. तेणु आउ गोटे डायमेंशन आमे एठी ऐड कले जे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट। आमे पिला को जतबे 8th क्लास पर्यंत पाठ पढैबा, पिलार अचीवमेंट मध्ये आमे यूनिवर्सलाइज हो बोली देखिबा। समस्त अचीव करंतु द बेसिक मिनिमम नॉलेज एंड स्किल। All the students belonging to the age group 6 to 14 must achieve the minimum basic skills and knowledge, the basic minimum skill and knowledge। जो मिनिमम दक्षता और मिनिमम ज्ञान जति पिला अचीव करबा कथा 6 ରୁ 14 वर्ष मध्ये समस्त शिशु से बेसिक मिनिमम नॉलेज और स्किल अचीव करन, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट हबो केमती, यार दीटा सब पॉइंट रहिला। वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस एंड द अदर इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सक्सेस। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस रो अर्थ होला राइट ऑफ ऑल पीपल टू अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। आमे सेतिके बेले आम गोल अचीव करि परिबा जेते बेले जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय बा शारीरिक मानसिक अक्षमता निर्विशेष रे आमे सबु पिला को एजुकेशन रो एक्सेस देबा, आमे सबु पिला को एजुकेशन रो सुजोग देबा। आउ एठी आउ गोटे एक्सेस रो अर्थ भी आसीबो, सबु पिला एजुकेशन को एक्सेस करिवे बा एजुकेशन पाइबार, एजुकेशन बा शिक्षा रो सुजोग गुडा को प्राप्त होबे, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस। जाति, धर्म, वर्ण, अक्षमता भित्तिरे आमे काहा को डिप्राइव करिबा नै। जाति, वर्ण, धर्म बा शारीरिक और मानसिक अक्षमता निर्विशेष रे समस्त शिशु को एजुकेशन रो एक्सेस मिलवा दरकार बा एजुकेशन रो सुजोग मिलवा दरकार। एठी आउ गोटे कथा पिला माने सुनो, ए जो एक्सेस कथा हमें कहूचे तमे देखथिबो विभिन्न स्कूल रे इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल्स भिन्न भिन्न प्रकार थाए। गोटे स्कूल रे हुए तो कंप्यूटर अछि, आ गोटे स्कूल रे कंप्यूटर नाही। गोटे स्कूल रे बहुत बढ़िया लैबोरेटरी, आ गोटे स्कूल रे बढ़िया लैबोरेटरी नाही। गोटे स्कूल रे 5000 बही अछि, आ गोटे स्कूल रे हुए तो भलो बही 500 खंड भी नाही। So there is a difference. So this the access of educational opportunity, जो educational opportunity बा शिक्षा ग्रहण करिवार जो सुजोग से भिन्न भिन्न स्कूल विभिन्न प्रकार जदि हे जिवो ताले we cannot say that it is universalized. So universalization of access means education रो समस्त प्रकार सुजोग समस्त को समान भाव में मिलवा दरकार। सब स्कूल रे
समान टाइप रो शिक्षा शिक्षण व्यवस्था रहिबा दरकार समान टाइप रो इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल्स रहिबा दरकार दिस इज नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ व्हाट क्वालिटी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी आम जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा से समस्त को समान क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा से आम कहवा इट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस एजुकेशन रो एक्सेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी रो एक्सेस बा शिक्षा सुजोग रो सुविधाटा समस्त को समान भाव में मिलवा दरकार यहाँ हूँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस द्वितीय कथा कौन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट द्वितीय आस्पेक्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सक्सेस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सक्सेस सक्सेस शब्द तुम जान सफलता ये जो कथा मुझे तुमको कहली जे सक्सेस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल बेसिक मिनिमम स्किल और बेसिक मिनिमम नॉलेज ऑल मस्ट अचीव मिनिमम जेतिकी ज्ञान लाभ करने कथा मिनिमम जेतिकी दक्षता हासिल करने कथा समस्त शिशु 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य समस्त शिशु सेतिकी निश्चय भाव में अचीव करने दरकार तेणु यहाँ आम केमती जाना हाउ वी कैन ascertain हाउ वी कैन कन्फर्म that all the students belonging to the age group 6 to 14 they have achieved basic minimum knowledge and basic minimum skills after completion of their 8th class आम केमती जाना को एथिपाई गवर्नमेंट आउ गोटे क्राइटेरिया देला व्हाट इज दैट आम केमती एनश्योर करवा जे 8th क्लास पास कला बेले बा 8म श्रेणी पास कला परे पिलार मिनिमम जेतिकी दक्षता दरकार बा मिनिमम जेतिकी नॉलेज दरकार मिनिमम जेतिकी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस कैपेसिटी दरकार ये सब ता भीतर डेवलप करछि कि ना हाउ वी विल कंफर्म दैट हाउ विल एंश्योर दैट हाउ टू ascertain दैट फॉर दैट देयर इज ए यार्डस्टिक गोटे इंडेक्स तैयारी करा गला दैट इज नोन एज MLL मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग रिमेंबर दिस टर्म मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग बा निम्नतम शिक्षण स्तर सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रत्येक शिशु 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य प्रत्येक शिशु सर्वनिम्न शिक्षण स्तर अचीव करने दरकार ये सर्वनिम्न शिक्षण स्तर बा MLL मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग कौन ना इट इज राइट इट डाउन एटलीस्ट 40% स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल एटलीस्ट 40% स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल must achieve 40% mark at least 40% student of a school must achieve more than 40% mark गोटे प्राथमिक विद्यालय रो अति कम रे 40% पिला 40% रु अधिक मार्क सिक्योर करबा दरकार जो पाठटा पढ़ाउची तार 40% अचीवमेंट अति कम रे हेबा दरकार गोटे विद्यालय रे जदि 500 पिला अछंती ताल तार 40% केते 200 पिला 200 स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल मस्ट सिक्योर मोर देन 40% मार्क टोटल मार्क रो 40% रु अधिक मार्क रखा दरकार दैट इज मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग शिक्षण रो सर्वनिम्न स्तर अति कम रे 40% पिला 40% रु अधिक मार्क रखा दरकार सो इन दिस वे वी कैन ascertain we can ensure whether all the students belonging to the age group 6 to 14 6 ରୁ 14 वर्ष भितर समस्त शिशु 8म श्रेणी पास कला परे सेमानकर अचीवमेंट हेइछि कि नाही तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट मीन्स आउटकम ऑफ द एजुकेशन इज टू बी बेस्ड ऑन MLL मीन्स स्कूल रो एटलीस्ट 40% स्टूडेंट्स मस्ट अचीव मोर देन 40% मार्क ओके इज इट क्लियर दिस इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ये पार्टिसिपेशन शब्द बा योगदान करवा मिसिबा पार्टिसिपेशन रे कौन कहा गला ना पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इज इनएविटेबल गोटे कम्युनिटी रो पार्टिसिपेशन निहाती रहिबा दरकार ये गोटे डायमेंशन जदि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहिबो नाही बा जदि गोष्ठी इन्वॉल्व होबो नाही जदि लोकल पीपल इन्वॉल्व हेबे नाही ताहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन संभव होबो नाही काहे कि होबनी ना कम्युनिटी रो गोटे विराट रोल रहुची कम्युनिटी टीचर सप्लाई करूची कम्युनिटी स्टूडेंट सप्लाई करूची कम्युनिटी अनुଯାयी आमे पिला को तैयारी करूचे गोटे कम्युनिटी रो आवश्यकता अनुଯାयी आमे छात्र छात्री मान को प्रस्तुत करू गोटे कम्युनिटी रो आवश्यकता कोन से अनुसार आमे छात्र को प्रस्तुत करू विद्यालय शिक्षा प्रोवाइड करू तेनु कम्युनिटी इज टू बी मोबिलाइज्ड
to take the responsibility for identifying its own needs. Community तैयारी करिवो जे मोर एई गोष्ठी रे एई एरिया रे एई स्थान रे आवश्यकता कोन से प्रथम तार आवश्यकता गुडा स्थिर कला परे आमे सेई अनुसार पिला को शिक्षा प्रदान करिवा so that after completion of class 8 after attaining the age of 14 the child can contribute to the development of the community. पिला को आमे सेई भाबरे प्रस्तुत करिवा जहा द्वारा छात्र छात्री माने से कम्युनिटी रो नीड बा गोष्ठी रो आवश्यकता पूर्ण करि परिबे. तेनु पिलाटा जतबे अष्टम श्रेणी पास करिवो सेटा कम्युनिटी पे कार्य करि परिबो. दिस इज वन थिंग व्हाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज नीडेड. द्वितीय कथा हला कम्युनिटी इज टू बी एनकरेज्ड टू टेक डिसिसिव रोल इन एन्श्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोग्राम. कम्युनिटी रो विभिन्न रोल अछि. जदि कम्युनिटी पिला को एडमिशन न देला स्कूल रे जदि बापा माँ पिला को नहीं स्कूल रे एनरोल्ड न करेले ताले व्हाट गवर्नमेंट विल डू. सो कम्युनिटी एनकरेज करिवो पेरेंट्स मानकु कम्युनिटी निजे इन्वॉल्व हबो केमती पिला माने क्लास रे एडमिशन करिवे प्राथमिक विद्यालय केमती से मान प्रदान करा जिवो व्हाट दे विल रीड व्हाट टाइप ऑफ स्किल दे विल डेवलप हाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल अटेंड स्कूल हाउ डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द स्कूल विल बी सक्सेसफुली कंडक्टेड. ये सब कार्य पई कम्युनिटी बा गोष्ठी रो पार्टिसिपेशन निहाती जरूरी. So universalization of participation refers to all the community must be involved wholeheartedly in the program of universalization of elementary education. प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण सफलता पाई समस्त गोष्ठी सेमानकर पार्टिसिपेशन बा सेमानकर योगदान प्रदान करबा उचित. तो ऑल द स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स निजे स्टूडेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट विभिन्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये समस्त योगदान द्वारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन विल बी ए सक्सेसफुल वन. सो दीज आर द मेजर 5 डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन गोटे किलोमीटर रे गोटे स्कूल तैयारी करिबा. Universalization of universalization of enrollment. All the children belonging to the age group 6 to 14 must be enrolled in an elementary school. Then universalization of retention. All the students taken admission in the elementary school must be retained in the school up to completion of class 8. Then universalization of achievement. The minimum basic skill and knowledge required for development of the society and nation must be achieved by all the children belonging to the age group 6 to 14. Then universalization of participation. All the communities must participate in the program of universalization of elementary education for its success. These are the 5 dimensions of what we have read today. In the next class, we will deal with what? We will deal with the challenges and problems in the way of universalization of elementary education. आमे जेते कथा कहिले एतरे गुडाई समस्या अछि पिला माने एते सहज नुआ को अचीव करिबा. So in the next class we will deal with what are the problems in the way of universalization education and what are the challenges in the we are facing and we have to handle what are the challenges in the way of universalization of elementary education that we will read in the next class. So with this let me wind up here. Have a good day. See you in the next class.